Hi students, welcome to all of you in the class of English. Dear students, in this video we are going to attain the last 6 paragraphs of lesson number 10, the Great Stone Face, part 2nd. Dear students, earlier we have attended the lecture on the beginning part of the story, and we have come to know that the poet comes to meet Ernest, who had already written a poem about the Great Stone Face. Ernest was taking him as a great or a noble person and just thought to be the likeness of the stone face in that person. Dear students, in this video we shall come to know how they meet each other, how the person talks about the stone face, and what kind of similarities, what kind of difference can he find in Ernest, and what is his thoughts, how has he explained this. And dear students, as we have already come to know about the prophecy of the valley, that it will be fulfilled by the person who will come to the valley and his face will match or resemble with the stone face, and that person will be known as the you can say pioneer of the valley. Dear students, now we would like to start ourselves from the last 6 paragraph, and we shall have a look on page number 135. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the Great Stone Face. Dear students, what happens? It was a time of sunset, and as a custom, Ernest has to speak something to the group of neighbors in the open air. That means we can say, हम ये कह सकते हैं कि अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों के एक समूह को बोलने जा रहा था, because we have already come to know that the poet came to the valley, और ऐसा फील हो रहा था कि शायद उस पोएट का जो फेस होगा स्टोन फेस से मैच करेगा, ऐसी बातें चल रही थी, बट ऐसा शायद होता नहीं है. और सनसेट के टाइम में ओपन एयर में अर्नेस्ट, जो कि ऑलरेडी एक थॉटफुल पर्सन था, उसके अंदर अच्छे खासे विचार भरे हुए थे. सो व्हाट हैपेंस, होता क्या है, वे साथ साथ एक दूसरे से बाहों में बाहें डाले हुए चलते रहते हैं. एंड फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, मतलब वहां से स्टोन फेस को देखा जा सकता था. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. It was not mere breath that the preacher uttered. They were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. सो व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, देखा क्या जाता है कि जैसे ही अर्नेस्ट ने फैमिलियर काइंडनेस का लुक अपने चारों तरफ ऑडियंस की तरफ बिखेरा, उसने लोगों से बोलना शुरू किया, जो कि उसके पूरे हार्ट और माइंड से आ रहा था. उसके शब्दों में ताकत थी क्योंकि वो विचारों से सहमत था वो, और उसके थॉट जो थे उसमें रियलिटी दिख रही थी, काफ़ी गहराई दिख रही थी, क्योंकि वे कह सकते हैं कि जो जिंदगी उसने गुजारी थी वो उसके साथ एक साथ चलती चली जा रही थी. ये केवल एक कह सकते हैं कि को जो उपदेशक का बोला हुआ शब्द की उसकी चौड़ाई नहीं थी, कि उसका विस्तार बस नहीं था, वे जीवन के शब्द थे. अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम, मतलब कि अच्छे काम का और निस्वार्थ प्रेम की भावना उसके अंदर भरी हुई थी. द पोएट एज ही लिस्टेंड फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर नोबलर strain of poverty than he had ever written.
क्या फील किया कि जो पोएट ने ये महसूस किया, जैसा उसने सुना, जब पोएट ने अर्नेस्ट को सुना तो उसने महसूस किया कि जो कुछ उसने पोएट्री में मेंशन किया था, जो अर्नेस्ट की लाइफ उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने खुद से ये कहा कि दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज द मिल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। मतलब ऐसा कोई सेज, कोई संत या वाइस मैन हमने नहीं देखा जो इतना नम्र हो, इतना मधुर हो और इतना विचारमग्न चेहरे वाला हो, जिसके कह सकते हैं कि ग्लोरी सी भरी हुई, जिसके सफ़ेद बालों में हर तरफ जैसा सफ़ेद बाल भरे होते हैं उससे ग्लोरी भरी हुई है। As a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face, with white mists around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." सो डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस, एक दूरी पर बहुत ही क्लियरली दिखा जा सकता था, बहुत ही ऊंचाई पर, कि मतलब उस स्टोन फेस के ऊपर गोल्डन लाइट पड़ रही थी जैसे ही सूरज अस्त हो रहा था। और जैसा ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दिया, उसके चारों तरफ धुंध छा गया, मतलब कोहरे सा बादल छा गया। और जैसे लगा कि जो वाइट हेयर्स होता है, जैसे जैसे वाइट हेयर्स अर्नेस्ट के सर पे छाए रहते हैं, उसी प्रकार से उसके ऊपर छा गया था। उसी क्षण क्या होता है कि अर्नेस्ट का जो फेस होता है, उसने ऐसा एक्सप्रेशन लिया जो इतना शानदार था कि पोएट उसकी तरफ हाथ कर करके इशारा करके चिल्ला उठा, उसे देखो, उसे देखो। अर्नेस्ट का चेहरा ही ग्रेट स्टोन फेस की तरफ मैच कर रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. So what happened? सभी लोगों ने देखा और ये महसूस किया कि जो कुछ वाट एवर द पोएट सेड वाज ट्रू, दैट मीन्स नाउ द प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड। बट व्हाट हैपेंस कि अर्नेस्ट को भी ऐसा भी लग रहा था, जो उसने कहा, वो पोएट के बाहों में पकड़े हुए वो घर की तरफ चलता है, अभी भी ये आशा करते हुए कि शायद उससे भी ज़्यादा वाइजर और बेटर मैन आएगा, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मैच करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, this was the story. Hope you have understood. Now dear students, I would like to assign you the homework. You will need to attend question number 3, 4, 5 and 6 are working with the text. As I have already assigned you question number 1 and 2 and comprehension check as well. So you will need to attend this question properly in your fair copy with neat and clear handwriting. Meet you in next video with the next topic. Bye.